Q3FY26 earnings conference call. As a reminder, all participants' lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ajit Mishra. Thank you, and over to you. Thank you. Good afternoon to all the participants. I'm Ajit Mishra from Ernst & Young Investor Relations. Before we proceed to the call, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risk, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with other business risks that could cause future result, performance, or achievement to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. Please note that we have mailed the press release, presentations, results, and the same are available on the exchange and company website. In case if you have not received the same, you can write to us and we'll be happy to send that same over to you. To take us through the results and address your questions today, we have the top management of Zota Healthcare Limited represented by Himanshu Zota, founder and whole-time director, Mokshesh Zota, managing director, and Dr. Sujit Paul, group chief executive officer. We will start the call with an opening remark on brief overview of performance for the quarter gone past, followed by question and answer session. With that said, I will now hand over the call to Mokshesh Zota. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today for Zota Healthcare Limited Q3FY26 earnings call. I am Mokshesh Zota, Managing Director of Zota Healthcare Limited. We appreciate your time and continued interest in the company as we walk you through our performance highlights and key developments for the quarter ended 31st December 2025. I trust you have an opportunity to review our Q3 FY26 financial results and investor presentation. Q3 FY26 was another quarter of strong execution for Zota Healthcare, marked by continued momentum in the expansion of our Dawa India retail pharmacy network. During the quarter, the company continued to accelerate the expansion of its Dawa India retail pharmacy network, adding 276 new stores, including 231 COCO and 45 FOFO stores. This took the total Dawa India footprint to 2331 stores as of 31st December 2025, reinforcing our national presence. This expansion reinforces our presence across India and reflects the scalability of our FOFO and COCO operating models. A key milestone during the quarter was the successful completion of INR 350 crore QIP, with the participation from a diverse set of institutional investors, including foreign portfolio investors, alternative investment funds, and mutual funds. The capital raised significantly strengthens our balance sheet and provides long-term financial flexibility. The proceeds from the QIP will be primarily utilized to accelerate the rollout of company-owned, company-operated Dawa India stores, support working capital requirements, and meet general corporate purposes. In line with our strategy to build fully integrated, scalable retail pharmacy ecosystem, the board approved the incorporation of a new wholly owned subsidiary, KMHP Ventures Limited, with an initial paid-up capital of 10 lakh rupees. This entity will engage in the marketing and trading of pharmaceutical products, enabling greater control over sourcing, distribution, and margin optimization as the network scales. Further strengthening our internal ecosystem, the company increased its investment in Dawa India Health Mart Limited, its wholly owned subsidiary, through additional equity subscriptions during and subsequent to the quarter. These investments are aimed at supporting the expansion of COCO stores and meeting working capital requirements, ensuring seamless execution at the subsidiary level, as store additions are accelerated. Additionally, as a part of our broader strategy to expand our footprint in retail generic and specialty pharmacy segment, the company acquired a 100% equity stake in Q3FY26, a retail pharmacy platform operating under the brand name Skia. Skia offers a comprehensive portfolio spanning pharmaceutical, nutraceutical, cosmetic, Ayurvedic, and OTC products. Collectively, this strategic initiative reinforces our confidence in achieving our medium to long-term objective of crossing 5,000 Dawa India stores across India by March 2029, supported by fresh capital from the QIP and steadily improving cash flows from our maturing store network. Looking ahead, our priorities remain clear: to continue scaling the Dawa India network with a sharper focus on unit economics,
to drive operating efficiencies and sustained profitability, and to deepen access to affordable high-quality generic medicine across the country. With that, I would now like to hand over the call to Himanshu Zota to take you all through financials and operational performance of the quarter. Thank you. Thank you, Moksha. Good afternoon, everyone. I will now take you through the financial and operational highlights for the quarter ended 31st December 2025. Starting with the financial highlights, consolidated revenue from operations stood to 14,295 lakh in Q3 FY26, registering a strong YOY growth of 98.2% compared to 7,212 lakh in Q3 FY25. This growth was primarily driven by continued store addition and improved scale across the Dava India network. Consolidated gross profit increased to 8,670 lakh, up 13% YOY from 4,029 lakh in the corresponding period last year, supported by operating leverages and high volume and scale benefits. Subsequently, operating profit and EBITDA moderate during the quarter. This was primarily on account of higher operating expenses linked to network expansion, as the company had over approx 400 plus stores under the development or in non-live stage, where manpower, rental and other pre-operative costs have already come in. As a result, the company reported a consolidated EBITDA to 127 lakh for the quarter. In terms of revenue contribution, Dava India contributes to the core growth driver, accounting of 80% of Q3 FY26 revenue, followed by domestic at 11%, export sales at 6%, and everyday herbal group at 2%. Moving operation performance, network expansion remains robust. During Q3 FY26, we added 276 Dava India stores, taking the total network of 2,331 stores as on 31st December 2025, comprising 1,438 COCO and 893 FOFO stores. So, in 9 months, current financial year, we added 586 COCO stores. Our geographic presence now stands to 23 states and 5 union territories, reinforce the national footprint of Dava India across both COCO and FOFO models. Quarterly customer footfall increased to 49 lakh in Q3 FY26, up from 27 lakh in Q3 FY25. Quarterly GMV rose to 12,172 lakh, nearly doubling YOY, reflecting improved store productivity and network scale. Additionally, Q3 FY26 GMV had GST impact of 5.15%. Average wallet spend remains stable, underlying the steady consumer behavior and value positioning. Overall, while near-term margins have been impacted by expansion of lead investment, we believe that these costs are transitory and positioned to company well for improved operation leverage, margin normalize, and profitability growth as newly added store mature. We will now open the floor for question and answer. Our team will happy to address any questions you may have. Thank you. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Chintan Sheth from Girik Capital. Please go ahead. Hi, Himanshu bhai. Thank you for the opportunity. The question I had was related to employee cost during the quarter. You mentioned something about pre-operating expenses for the 400 stores which are in pipeline. Is there any, if you can spell it out, how much is pre-operative cost, increased pre-operative cost because of, sorry about the background noise, I cannot avoid it. So basically, I'm trying to understand if you can spell out, quantify the pre-operative cost during the quarter. That is one. And second is on the GMV to revenue to GMV for the current quarter for the total Dava India is
95%. But you recollect when we discussed in the past, the FOCO store revenue to GMV typically ranges between 55%. Then I'm trying to understand why the revenue to GMV for the current quarter or even in the previous quarters were high relative to to the revenue. These are the two questions, and I'll join back in queue. Sure. Yeah, sure. Thank you. First of all, जो प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बेसिकली एम्प्लॉय कॉस्ट ही बढ़ा है क्योंकि हमने काफी सारे स्टोर इस क्वार्टर में ही रफली 231 स्टोर हमने ओपन किए जिसका रेवेन्यू बहुत ही निग्लिजिबल है। मतलब इस क्वार्टर में हमने 231 स्टोर ओपन किए और ऑलरेडी 400 स्टोर इन प्रोसेस थे एज ऑन 31 दिसंबर। सो ये जो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट है कंसोल लेवल पे जो 38 करोड़ का रफली था Q2 में वो बढ़ के हुआ है 52 करोड़। तो मोर और लेस ये एम्प्लॉय कॉस्ट ही बढ़ा है क्योंकि रफली 400 200 600 700 स्टोर का एम्प्लॉय कॉस्ट ही इसमें एडिशन हुआ है। तो मेजरली जो चंक है वो इसीलिए है कि इतने सारे स्टोर हमने इन प्रोसेस थे जो नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब 1 या 2 क्वार्टर में ये एकदम से नॉर्मलाइज हो जाएगा। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। सेकंड चीज GMV टू रेवेन्यू की बात करें उसमें दो टाइप। एक तो सबसे पहले तो हम फ्रेंचाइजी देते हैं उसमें फ्रेंचाइजी की लेते हैं विच इज नॉट GMV मतलब उसको GMV में वो GMV में नहीं आता वो रेवेन्यू में आता है। सो हम जो नए जितने भी फ्रेंचाइजी करते हैं वहाँ पे हम टेकन अ फ्रेंचाइजी फी विच इज अवर दवा इंडिया रेवेन्यू। तो हम वो भी एक रेवेन्यू एडिशन है। और सेकंड थिंग कि हम फ्रेंचाइजी को गुड्स देते हैं वो हमारी रेवेन्यू है। जरूरी नहीं है कि हमने जो फॉर एग्जांपल हमने 4 लाख का गुड्स किसी फ्रेंचाइजी को दिया डे 1 पे तो जरूरी नहीं कि वो 4 लाख का डे 1 में मतलब नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट क्वार्टर में वो बिक जाएगा। हो सकता है उसकी GMV कम होगी। दैट्स व्हाई फोफो में स्पेशली फोफो में मेरी रेवेन्यू और GMV में जो एज सच 40% का डिफरेंस होना चाहिए वो नहीं आता 2 क्वार्टर से क्योंकि वो बाइंग ज़्यादा करते हैं हमसे और आगे जाके हो सकता है उनकी GMV ना हो या कुछ फ्रेंचाइजी रेवेन्यू मतलब GMV अपना इनवॉइस भी ना बना रहे हो ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि फ्रेंचाइजी का उतने ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता तो हो सकता है कि वहाँ पे इनवॉइस वो GMV सेल्स कर रहे होंगे लेकिन GMV में वो काउंट नहीं कराएंगे। दैट्स व्हाई दैट डिफर हैपन। Sure, Himanshu. I'll join back in queue. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Harsh Shah from Seven Rivers Holding. Please go ahead. Hello. Good morning. Good afternoon, sir. Sir, if I look at the average revenue for the cohort which are more than 2 years old, so it has sort of flattened out. Maybe 2 year has come to around 3.9. Last quarter maybe it was almost 3.9 lakh per store. But if I look at the stores which are more than 3 years old, it has come down from 7 lakh to 6.85 lakhs. And even 12 to 24 months have come down from 2.39 lakhs to around 2.33 lakhs. So somewhere is it happening that the unit economics that we were envisaging is not happening as the stores are maturing? नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये GST इम्पैक्ट आया ना आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे ग्रोथ तो आया ही है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोहॉर्ट में जो 7.02 था Q2 में वो 7.2 हुआ है अगर मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूँ क्योंकि अगर GST कम हुआ है ना तो इसकी इम्पैक्ट GMV पे आएगी ना क्योंकि 5.15% GST इम्पैक्ट है अभी करंटली। तो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट कोहॉर्ट है जो सबसे पुराना स्टोर है जो 4 ईयर पुराना स्टोर है वहाँ पे भी Q&Q 4% का ग्रोथ है मतलब एनुअली 15 से 20% का एनुअल ग्रोथ है। तो ये वही ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। आपने देखा होगा कि सारे ट्रेजेक्टरी में इस बार आपको इसलिए कम लग रहा है कि GST इम्पैक्ट आया क्योंकि GST 12% से 5% हुआ तो इसके लिए GMV ऑटोमेटिकली हमारी MRP कम हो गई GST की वजह से और इसीलिए इम्पैक्ट आया। Okay, understood. And another thing, sir, आपने PPT में इसलिए PPT में हमने जो बार लाइन दिखाई है ना वहाँ पे जो साइड में 7.2 4.86 लिखा है वो एक्चुअल GMV है एज पर ओल्ड GST। Okay, understood. And sir, another thing is I was just tracking footfall per day per store जो हमारा
पिछले 7 क्वार्टर्स से इट इज समवेयर अराउंड 28-30 ही आ रहा है ऑन एन एवरेज. So what is happening there? I mean, why footfall per store अपना क्यों ऊपर नहीं जा रहा है? नहीं, काफी ऊपर गया. आप ये समझो कि कोई भी नया स्टोर खुलता है तो डे वन से 15-20 का ही फुटफॉल आता है. तो हमने पिछले 3 क्वार्टर में 600 स्टोर खोले, पिछले लास्ट 3 क्वार्टर में. तो आउट ऑफ 1400 स्टोर में से 600 स्टोर तो हमारे 3 क्वार्टर में ही खोले. तो अगर मैं उसको सेग्रीगेट कर दूं, फॉर एग्जांपल, कि अगर जो 2 साल पुराना स्टोर है या 3 साल पुराना स्टोर है या रिसेंट में ओपन स्टोर है, तो ये मतलब आप ये समझो कि ये सेम लेवल पे रहा. इसका मतलब कि इसमें इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि नए हमने जब इतने ड्रास्टिकली नए स्टोर खोल रहे हैं फिर भी ये स्टैग्नेंट है. तो इसका मतलब यही हुआ है कि पुराने स्टोर में फुटफॉल बढ़ रहा है. दैट इज अ बेसिक आइडिया. तो सर रफली कितना होगा फुटफॉल? स्टोर विच आर मोर देन 2 years ओल्ड, वहाँ पे एवरेज कितना फुटफॉल होगा अपना? नॉर्मली जो 3, फॉर एग्जांपल हमारे जो फर्स्ट कोहॉर्ट वाले स्टोर है जो करीब 7 लाख के ऊपर जो रेवेन्यू कर रहे हैं, उसका रफली फुटफॉल है, डेली का फुटफॉल है 80 to 100 के बीच में. ओके, 80 to 100 स्टोर्स. ओके. तो उसी के हिसाब से आप डाउन द लाइन जैसे डाउन कर दोगे 20, फॉर एग्जांपल सेकंड कोहॉर्ट में हो सकता है वो 60 to 80 होगा. उसके बाद मतलब उसी लेवल पे होंगे. ओके. एंड सर ये क्वार्टर में वर देयर एनी स्टोर क्लोजर्स? नो, इस क्वार्टर में हमने नॉट सिंगल स्टोर कोको स्टोर क्लोज, हमने कोई भी स्टोर क्लोज नहीं किया. 0 क्लोजर इन दिस क्वार्टर. Okay. And sir, I was looking at the employee cost. Average for this quarter, our average store count was somewhere around 1325. और मैं 60,000 रुपीज के हिसाब से आई थिंक अपना पर स्टोर एम्प्लॉय कॉस्ट इज अराउंड 60,000 रुपीज पर मंथ. तो वो हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 24 करोड़ आता है एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द कोको बिजनेस. बट अपना ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट इफ आई लुक एट इट 53 करोड़ है. So 30 crore cost for other business. I mean, why is that employee cost so high? एक तो एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी रफली अबाउट 65-70,000 रुपीज पर स्टोर है. 60,000 नहीं है, वो रफली अबाउट 65-70,000 है. सेकंड नॉन लाइफ स्टोर है हमारे, जो भी नॉन लाइफ स्टोर है, जो 400 प्लस नॉन लाइफ स्टोर है, उसके भी एम्प्लॉय कॉस्ट है. तो ये मोटा मोटी ये नॉन लाइफ और लाइफ दोनों स्टोर का मिला के एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी एज ऑन Q3 में ये रफली 80-85,000 हुई है, इंक्लूडिंग लाइव एंड नॉन लाइफ स्टोर. और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट सैलरी भी है इसमें 52 करोड़ में. तो ये इनलाइन ही है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी कॉस्ट बढ़ी है जो नॉन लाइफ स्टोर है, जो हमने एग्रेशन एक्सपेंशन किया है लास्ट क्वार्टर में, इसी के लिए. और ये आगे जाके ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में ये स्टेबलाइज हो जाएगा. Mr. Harsh, Okay. you may join the queue for follow-up questions. Sure. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants in the conference, please limit yourselves to 2 questions. Should you have any follow-up question, you may rejoin the queue. The next question comes from the line of Swaraj Mehta from Perpetual Capital Advisors. Please go ahead. Hello. Congratulations on a good set of numbers. I wanted to understand what are our steady state EBITDA margins at a company level. So store level EBITDA margins you said would be around 25 to 30%, but what would it be at a company level going down the line? And recently, Coco stores, the gross margins were around 60%. You said it will be around 60%, but this quarter I think it is around 67%. So how much more expansion in gross margin is possible, or 67 is also a steady state gross margin? Thank you. So in terms of margin, you last क्वार्टर में भी हमारा 66% का मार्जिन था रफली. इस क्वार्टर में और इसमें 1.5% का और है. तो ये हम ऑन एन एवरेज 60% का मार्जिन बोल रहे हैं, लेकिन इट इज मोर देन 67%. और ये हर क्वार्टर में ये 0.5 to 1% बढ़ता जाएगा. ये अप टू 70% तक जा सकता है. मे बी इट में रीच टू 70% डाउन द लाइन 4 से 6 क्वार्टर के बाद. तो यहाँ पे ये स्कोप है मार्जिन की. सेकंड चीज कि मैच्योर स्टोर लेवल पे EBITDA विल बी समवेयर अबाउट 25-30% का स्टोर लेवल पे. और कंपनी लेवल पे अगर सारे स्टोर मैच्योर हो जाते
So company level EBITDA will be somewhere about 20%. 17 to 20%. If entire all four are mature, subject to. Okay. And also wallet spend, it has been in a fixed range. So how do we see it going forward? So will it be in this range or it will go up? नहीं वो तो ऑलरेडी जा ही रहा है. एक्चुअली नया स्टोर इतने ज्यादा कर रहे हैं ना हम, क्योंकि नए स्टोर इतने ज्यादा एडिशन कर रहे हैं. और नॉर्मली क्या होता है, जब स्टोर खुलता है नया स्टोर, जब इनिशियल फेज में फर्स्ट 2 क्वार्टर में, तब वॉलेट स्पेंड बिलो 200 होता है, बिलो 200 होता है. सो अगर स्टेडी हो रहा है इसका मतलब कि वॉलेट स्पेंड बढ़ रहा है. ओके. और सर अभी वी acquired a brand name called Kia. So what are the plans with this? Kia. Okay, Kia. So primarily what we intend is that if you really see the prognosis journey of Dawai India, we are trying to command the country in totality towards affordable healthcare and generic medicines. So Kia has been a new entrance for us, where we would be kind of ensuring that to block any forecasted competition that can come to the country. And with that perspective, we have acquired the same. And this would also help us at a group level to spread the generic medicine retail concept, and also to further engulf the market in totality and kind of build a very strong brand equity for us at a group level. Oh, what will be our offerings under Kia? So will it be similar to Dawai India or how? It would be similar, but there would be certain differentiators from the consumer perspective. But yes, it would be similar to Dawai India in terms of generic medicine, health and wellness products as well. But in terms of differentiation from the consumer experience perspective and certain other perspectives, there would be a difference when they enter Kia. Mr. Swaraj, you may rejoin the queue for the follow-up question. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address all the questions from the participants, you may limit yourselves to 2 questions. The next question comes from the line of Manan Shah from Moneybee Investment Advisor. Please go ahead. Yes, hi sir. Thank you for the opportunity and congratulations for good set of numbers. Sir, my question was on our marketing strategy. So it has been almost 8 to 10 months since we've appointed our 2 brand ambassadors. So what is the strategy from here going forward, or what strategy are we planning for the upcoming year? What sort of budget are we planning? Are we planning any TVC campaign or anything? If you can just highlight on these points. Right. Yes, we have 2 brand ambassadors for us. Definitely Mr. Shetty, one of the very strong links in Bollywood and being renowned fitness, and Dhoni. So we have started an extensive BTL campaign around both of them, which is more of a neighborhood campaign that have already been initiated across the country. In terms of your other questions for TVC, we have already gone ahead and done the TVC shoot with Sunil Shetty. That's already been initiated, which you would see already being surfaced across the leading cinema halls across the country, along with a large number of taxis in Maharashtra primarily and certain other parts of the country. We have also gone ahead and done a TVC shoot with Mahendra Singh Dhoni this week, which would be kind of ready in the next 2 weeks' time. In terms of television broadcast, we have already initiated certain television broadcasts surfacing our brand ambassadors. The recent New Zealand match was well visible and many others in similarity. However, going forward, the TVCs would also get surfaced in the televisions as the months ahead. And in terms of budget, what sort of budget are you planning for the upcoming year? We are very careful about our spending budgets.
And the reason for the carefulness of the spending budgets is that the money would have to be well utilized towards spreading our focus stores, as what has been mentioned. However, as judiciously required, the budgets would be spent in direct relations to the growth of the organization. And are you seeing any positive traction in terms of, say, higher footfalls or new customers or new customer acquisition at your store level as a result of the campaign that we've already done? See, brand ambassadors, if you understand, are only brand ambassadors. The positive traction is a combination of multiple things. However, if you see the data points, in terms of average wallet spend and footfalls, we have seen for both there is an increase. So the data have been surfaced from the sheets that you have seen and the quarterly footfalls. So there has been quite a movement, but that is not the only outcome for the brand ambassadors. That is only one of the derivatives of it. Sure, thanks. I'll get back in the queue. Thank you. The next question comes from the line of Umesh Ladda from Nirmal Bang. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. Please proceed with your question. Yeah, thank you for the opportunity and congratulations for the good set of numbers. So, sir, my first question is on the store expansion front. So, is there some reduction in the guidance for FY27 as we are planning to open almost 1,000 stores? Sorry, how much stores? In FY27, we are planning to open 1,000 COCO stores. So, is there some reduction in that guidance, or it will be the same? So, that is my first question. Yeah. So it is near to same. अभी उसका exactly हमने क्योंकि हम जब 400 करोड़ का QIP का प्लान किया था तब we are planning 1000 स्टोर. अभी QIP को हमने थोड़ा सा डिक्रीज किया है 400 करोड़ की जगह 350 करोड़ किया है. तो प्रोपोर्शनेटली हम मतलब थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं. इट इज नॉट इज डिसाइडेड बट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा इसमें. Okay, sir. Understood. And also, sir, second question था कि are we comfortable in giving some revenue or maybe EBITDA guidance for FY27 or maybe say FY28? No, that guidance we can, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये एग्रेशन मोड में हम जा रहे हैं और जब एग्रेशन मोड में जाएंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. लेकिन यू कैन सी द ट्रेजेक्टरी ऑफ, क्योंकि हमने सारे क्वार्टर का क्या ट्रेजेक्टरी में स्टोर जा रहा है उसका सारा डेटा दिया हुआ है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाके क्या रेवेन्यू आ सकती है. Got it, sir. And sir, last question है, what are the steps which we are taking to increase the wallet spend of the say patients in the COCO stores, because the wallet spend has been pretty much stable. So any color if you could give on those lines? See, if you really see the wallet spend and okay, what is the wallet spend derivative output? If we are not expanding, then there is one mathematical formula that you have to put. If we are expanding, then the mathematical formula is different. For example, if we have opened the number of stores that we spoke about, and in spite of that the wallet spend is 231, it means if you put the formula, then what it means is that we have actually grown, because there are a bunch of new stores that you have, right? Where the actual wallet spend is low. Am I making sense for you? So if that is true, and in spite of that your wallet spend is at 231, so now you put the formula and see basically you are at a accelerator mode. Okay, got it. That's it from my side. Thank you so much. Thank you. The next question comes from the line of Arman from Blue Sky FinTech. Please go ahead. Congratulations, sir, first of all, for a very good set of numbers. I have just one clarification and one follow-up. Clarification is that, like COCO stores, mature ones will give us 25 to 30% margins, right? And what will be the FOFO mature FOFO stores margin?
क्योंकि फोफो स्टोर में हमारा कोई भी मतलब वहाँ पे एबिटा मार्जिन विल बी द ग्रॉस मार्जिन विल बी द एबिटा मार्जिन, क्योंकि फोफो स्टोर में हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारा इन्वेस्टमेंट उनका है। हम एक फिक्स नंबर ऑफ मार्जिन उनको प्रोवाइड करके उनको गुड्स सेल्स कर देते हैं, तो वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन या फोफो में ग्रॉस मार्जिन विल बी समवेयर अबाउट 40 to 45%। नहीं सर, क्योंकि मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी हमने बोला कि सारे मैच्योर्ड स्टोर जब टोटल हो जाएंगे तो वो 17 to 20% के आसपास का हमको मार्जिन देंगे, बिटा मार्जिन। और हमने कोको स्टोर का ऑलरेडी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बता रखा है कि वो सारे अगर मैच्योर्ड कोको स्टोर है तो 25 से 30% का मार्जिन देते हैं अपने को। पर अगर हम ब्लेंडेड मार्जिन अगर हम बोल रहे हैं कि सारे मैच्योर होकर 17 से 20% हो जाएंगे तो डेफिनेटली फोफो का जो मार्जिन है, बिटा मार्जिन कंसिडरेबली लोअर है, राइट? तो ये वाला जो अपना रेशियो है जिस हिसाब से अपन कोको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जो अभी के स्टोर है उस हिसाब से क्या ये कहना वेरी सेफ होगा कि हम FY28 के अराउंड 16% के अराउंड तो मार्जिन जा ही सकता है हमारा? फोफो स्टोर की बात कर रहे हैं आप? फोफो स्टोर नहीं, ओवरऑल ब्लेंडेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा मेजर एक्सपेंशन में से भी कोको में ही है। यस। तो FY28 के लिए क्या ये सेफ है, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज मैच्योर स्टोर्स है वो रेगुलरली बढ़ता रहेगा कोको के लिए, क्योंकि अभी जो और हम FY28 की बात करें तो क्या ब्लेंडेड मार्जिन हमारा 17-18% के आसपास आराम से पहुंच सकता है FY28 में? ये आप अभी क्योंकि हम नया स्टोर कितना खोल रहे हैं, अगर हम नया स्टोर आज से बंद कर देते हैं, मतलब कि आप ये समझो कि नया स्टोर में खोलना बंद कर देता हूँ, तो ये डेफिनेटली ये हो सकता है विच यू से कि अगर नया स्टोर हम नहीं खोलते तो डेफिनेटली ये हो सकता है, दैट विल डेफिनेटली पॉसिबल। ओके। हाँ, क्योंकि मैं उसको भी अकाउंट फॉर कर ही रहा हूँ सर कि जैसे क्योंकि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे मैच्योर स्टोर्स लगातार कंपेरेटिवली आगे जाते ही जाएंगे, राइट? और फोफो स्टोर भी मैच्योर होते ही जाएंगे। लेकिन नए नए स्टोर भी खोलते जाएंगे तो वहाँ पे भी जो मैच्योरिटी मतलब मार्जिन ट्रैक करेगा ना वो, इसलिए अगर मैं नया स्टोर नहीं खोलता हूँ और अभी जो जितने स्टोर है उसी को ही रन करता हूँ तो ये डेफिनेटली 15 से 17% का एबिटा मार्जिन बना सकते हैं 28 में। ओके, 29 इजीली बना सकते। ओके। और सर ये मेरे को बस एक मैच्योर स्टोर्स पे पूछना है, क्योंकि जैसे आपने वो GST का ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया, आपके हिसाब से मैच्योर स्टोर्स का किस लेवल तक वो पहुंच सकता है? जो अभी 7.2 हम यहाँ पे पहुंच गया ऑलरेडी, जो 39 से 54 मंथ वाले 29 स्टोर्स हैं, तो वो आपके हिसाब से लगभग कितना कर सकते हैं वो? ये कहना, क्योंकि अभी भी ये फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट कोहोर्ट है वो 82 लाख पर एनम कर रहा है अभी रफली, 7 लाख पर मंथ है तो 82 लाख पर एनम, और ये भी 15 से 20% YOY ग्रोथ पे अभी करंटली स्टिल। अच्छा, तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये अगले 2 साल में और अगर 12-15% भी जाता है तो ये 1 करोड़ के ऊपर भी रेवेन्यू जा सकता है पर स्टोर पर एनम। ओके, सो अभी भी यहाँ पे आराम से आपके हिसाब से पोटेंशियल है ग्रो करने का? यस, अभी भी, क्योंकि अभी भी 2 डबल डिजिट में ग्रोथ आ रहा है स्टिल। सो अभी भी ये मैच्योर नहीं कह सकते, अभी भी ये यहाँ पे ग्रोथ इज वेरी हाई, मतलब 15 से 20% के बीच में ग्रोथ है। अच्छा, और ये जो सारे मैच्योर Mr. Arman, sorry. Sure. The next question comes from the line of Parikshit Kabra from Peakday Advisors LLP. Please go ahead. Hi, thank you for the opportunity and congratulations on your rapid expansion. मेरा मेन सवाल वापस एम्प्लॉय कॉस्ट में था। मैं जानता हूँ कि आपका एम्प्लॉय कॉस्ट एज यूर एक्सपैंडिंग आप लोग एम्प्लॉयज ऐड करते हो इवन बिफोर द रेवेन्यू कम्स इन, बट आई हैव लुक्ड एट आपके हिस्टोरिकल नंबर्स में एंड जनरली अगर मैं देखूँ तो आपके ओवरहेड एम्प्लॉय कॉस्ट करीबन 10 करोड़ आते हैं अगर अपन एक अप्रोक्सीमेट नंबर ले ऑफ द नंबर ऑफ स्टोर्स दैट यू आर ऑपरेटिंग इन कोको। इस बार अगर मैं नंबर ऑफ स्टोर्स आपने ऐड किए उसके मुताबिक भी मैथ करूं तो द नंबर इज नॉट एडिंग अप, द एम्प्लॉय कॉस्ट इज ओवरशॉट अ लॉट। तो अनलेस अपन इस अगले क्वार्टर में बहुत सारे नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं और उसके भी एम्प्लॉयज अपन ने जल्दी ले लिए, वो नंबर बैठ नहीं रहा है। क्योंकि अभी हमने एज ऑन 31 दिसंबर 400 प्लस स्टोर तो हमारे प्रोसेस में थे और 221 स्टोर ऑलरेडी हमारे लास्ट क्वार्टर में हमने ओपन किए।
तो रफली 650 स्टोर का एम्प्लॉय कॉस्ट था लास्ट क्वार्टर में, रफली 650 नए स्टोर। हाँ, क्योंकि 400 प्लस तो हमारे नए स्टोर ओपनिंग बाकी है, मतलब इन प्रोसेस है एज ऑन 31 दिसंबर, और 221 स्टोर हमने लास्ट क्वार्टर में खोले, जो भी ऑलरेडी वो लास्ट क्वार्टर में हमने खोले, तो वो भी तो बराबर। तो ये 400 इसी क्वार्टर में खुलने वाले हैं, मतलब नॉर्मली 90 to 120 डेज में खुल जाएंगे, तो ये 400 में से 70% स्टोर तो इसी क्वार्टर में खुल जाएंगे। बराबर। तो बट पूरे 400 का अपन ने एम्प्लॉइज पहले से ले लिए थे, ऐसा बोल रहे हैं आप? क्या? See, actually, you have to understand certain dynamics. Hold on. So you take employees, you train those pharmacists, then you will need the license to apply. Then, so there's a whole process around it, right? So towards running through the entire chain of process, you have to take the employees well in advance, and then you have to park those employees, get into a full-fledged of training to ensure that there's no dispensing error, etc., etc. And subsequently, their existing license have to be free from the existing place. You have to get the license. You have to send it to the drug department, get it endorsed. So there's a whole process to run the entire chain. No, you're absolutely right, sir. And I've been tracking your company for a while now, so I appreciate that. It just seems that this time around, the jump is higher than your normally is. So unless the speed at which your opening stores has increased materially, it does not justify that. So unless you're going to see a massive spike in the next quarter is what I'm asking, basically. Exactly what I was telling you. So in this current quarter, so it is Jan, Feb, March, so there would be substantial numbers of store openings that you would see subsequently. Got it, sir. That's all. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Zohaib from Analysts. Please go ahead. Hi. Am I audible? Yeah. Yeah, sir, I just have couple of questions. Sorry to interrupt. There is a background noise from your end, which is creating a disturbance. Yes, there is a background noise from your end, which is creating a disturbance. Can you speak some line again? Hello. Now you can proceed. Yeah, so I had one question about the resolution passed in AGM, which said that there is a commission for the whole-time director totaling up to 1.1% of the annual consolidated turnover. So is it? I just wanted it's in 0.2, 0.2, and 0.2 and 0.3. So I just wanted to know, is it a part of minimum remuneration, or is it, there is a condition for that? I just wanted to know that. No, it is a part of minimum remuneration. Okay, so around 1.1% of the consolidated turnover would be given as minimum remuneration. I mean, that is a huge number if we see. And apart from that, it came along with the remuneration increase of about 42-43% hike. And the fact that we are on a consolidated basis, we are making a loss. So is it, I mean, the ideal case would be, linking the incentive with the net profit so that the management works towards the profitability of the company, isn't it? So this is a minimum remuneration because promoters are since founders and since last 30 years experience of this business. तो ये तो एक मिनिमम रेम्यूनरेशन ही है. इट इज नॉट बिग. और जब इसने ग्रॉस मार्जिन पे, जब दवा इंडिया में हम जब 60%, 66% का ग्रॉस मार्जिन पे कंपनी चला रहे हैं, जब 1% इज नॉट अ बिग अमाउंट. And sir, this would be continued till 2030. Am I right? Yes. Okay. And sir, what is the process? Update on the warehouse we are planning to open in Delhi. Is already open. Yes, warehouse is already open. Yes. Okay. That's it from my side. Thank you. Thank you.
The next question comes from the line of Nishita from Sapphire Capital. Please go ahead. Yes. Hello. Am I audible? Yes. Yes, you are. So I'm looking at this company for the first time. So I'm sorry if my question would be very basic. So I just wanted to understand that you mentioned at once the cocoa stores are mature, we can have an EBITDA margin of 17 to 20%, and from FOFO stores we have the EBITDA margin which translates from gross margin of 45%. So on a consolidated company level, why is our margin in 3 to 5% range? Because like from Dava India, our revenue contribution is 80%. Sorry, I cannot understand your question. So I just wanted to understand that from Dava India, our revenue contribution is 80%, and from that only, from cocoa stores we have at mature level we can get an EBITDA margin of 17 to 20%, and from FOFO stores we can have an EBITDA margin of 45%. So shouldn't we have a higher margin on a consolidated company level as well? Because from what I see, we have an overall EBITDA margin of 3 to 5% range only. Gross margin, you can see the gross margin. अगर मैं YOY की बात करूँ तो gross margin will be already 55% company level पे था, तो बढ़ के अभी 60%, मतलब 5% का increase हुआ YOY बेस पे. तो gross margin इसीलिए बढ़ रहा है कि दवा इंडिया का revenue बढ़ रहा है तो gross margin बढ़ ही रहा है. EBITDA margin में इसलिए impact आ रहा है कि नए स्टोर हम कोको खोल रहे हैं. आगे जाके वहाँ पे भी ये impact दिखेगा down the line 2-3 साल में. तो gross margin will be increased. YOY. You can see quarter on quarter, even quarter on quarter, gross margin will increase. So in 2 to 3 years, can we see the EBITDA margin in the range of 15 to 17% on an overall consolidated level? ये अभी अगर सेम स्टोर फॉर एग्जांपल मैं आगे भी मैंने इसका आंसर दे दिया है कि अगर हम नया स्टोर नहीं खोलते फॉर लेट्स एग्जांपल, तो ये 100% अगर नया स्टोर नहीं खोलते तो ये EBITDA मार्जिन 18 से 20% कंपनी लेवल पे जा सकता है डाउन द लाइन 2 साल में, अगले 2 से 3 साल में ये डेफिनेटली जा सकता है. और मोर देन दैट सब्जेक्ट टू नया स्टोर अगर नहीं खोलते. Okay, understood. Thank you so much. Thank you. The next question comes from the line of Bhaskar Kandar from 3 Capital. Please go ahead. हेलो सर, मेरा साउंड आ रहा है? Yes. सर मेरा क्वेश्चन था, QIP का यूटिलाइजेशन जो ब्रेक इवन है वो एक बार बोलिएगा तो अच्छा होगा. मतलब जो 350 रुपया हमने उठाया है उसका कहाँ पर खर्चा करेंगे. और एक क्वेश्चन है सर, EBITDA मार्जिन इस बार डाउन हुआ है एम्प्लॉय कॉस्ट के वजह से. नेक्स्ट क्वार्टर से क्या EBITDA मार्जिन पॉजिटिव हम एजम कर सकते हैं और यहाँ से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है? मेरे 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सॉरी, QIP का पैसा, QIP का. हाँ, QIP में जो 350 रुपया हमने उठाया है इसका क्या कहाँ पर क्या खर्चा करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है. सो QIP में हमने जो 350 करोड़ लिया है ये मोस्टली सारा का मतलब मोस्ट ऑफ द पैसा दवा इंडिया पे ही जा रहा है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो चाहे नए स्टोर ओपनिंग में हो. मोस्ट ऑफ द पैसा कुछ TCP और उससे बाकी मोस्ट ऑफ द मनीज आर इन द दवा इंडिया डेवलपमेंट. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जैसे आपने बोला इस क्वार्टर में हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट ड्रास्टिकली बढ़ा है ड्यू टू नॉन लाइफ स्टोर. और हमने फॉर एग्जांपल दिसंबर से नया स्टोर, क्योंकि हमने इस साल का जो भी टारगेट था ऑलरेडी हम इन लाइन है, तो हमने नया स्टोर जो एडिशन करना है, नया स्टोर इन प्रोसेस में डालना है, ऑलरेडी हमने कम कर दिया लास्ट 2 महीने से. तो अगले 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में ये वापिस नॉर्मलाइज हो जाएगा. ये सिर्फ 1 क्वार्टर के लिए स्पाइक आया है, अगले क्वार्टर से ये और थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा और 1-2 क्वार्टर के बाद ये एकदम से नॉर्मलाइज हो जाएगा. ओके सर, थैंक यू. सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर, स्टोर लेवल पे कुछ इन्वेंटरी साइड तक के लोकल जो स्टोर लेवल पे आप जाते थे वहाँ पर देखता हूँ कि इन्वेंटरी में शॉर्टेज दिखाई दे रहा है. क्या वहाँ पर कुछ इशू है स्टोर लेवल पे? अच्छा, तो ये आप कहाँ कोको स्टोर में गए या फ्रेंचाइजी? क्योंकि फ्रेंचाइजी स्टोर में तो हमारा कंट्रोल नहीं है.
सर मैं कोको स्टोर में गया था, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलिए। मान लीजिए कि आपका जो सवाल है कि कभी कभी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता, बेसिकली ये आप बोल रहे हो, राइट? हाँ सर। ओके, हाँ ये बात सही है। सी व्हाट हैपेंस इज दैट ये कहीं पे भी आप जाएंगे, कोई भी स्टोर में जाएंगे, you will at times find that okay, maybe you may have sometimes this medicine not available, and it will come back after some time. It is a continuous process of efficiency. But sir, pharmacy बोल रहा था कि there is segment issue, like ऐसा। Please listen to me. It is a continuous process of efficiency development. Yes, you are right. Sometimes there may be one or two medicines which may not be available in their store, and this is a continuous process to ensure that the inventories are continuously improved. As simple as that. Mr. Bhaskar, you may rejoin the queue. The next question comes from the line of Neil Joshi, an individual investor. Please go ahead. Hello. गुड आफ्टरनून टीम। सो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हमने जो भी QIP किया तो उसका हमने जो दवा इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो मेनली हमने दवा इंडिया के शेयर्स परचेस करने में किया कि फिर हमने नया एक्सपेंशन के लिए किया, और साथ में कि अभी हम QIP से ही फंड रेज करते रहेंगे तो प्रमोटर का ऑटोमेटिक ऑलरेडी अभी हम 51% से डाउन हो चुके हैं, तो अभी हमारे पास और कितना स्कोप है कि हम और QIP से फंड ही रेज करते रहेंगे, ना कि हम ऑपरेशनल प्रॉफिट जनरेट करके फिर उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करें। ओके, तो ये हमने जो QIP किया है ये अगले 2 साल के लिए हमने किया है। ये जो फंड आया अगले 2 साल तक वी हैव इनफ फंड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1 अप्रैल 2026, मतलब 26, 27 और 27, 28 2 साल तक वी डोंट रिक्वायर्ड एनी फंड, एनी आउटसाइड फंड, और 2 साल के बाद हमारे काफी सारे स्टोर मैच्योर हो जाएंगे, तो इंटरनली कैश इतना जनरेट हो जाएगा कि मे बी अभी नेक्स्ट फंड रेज की रिक्वायरमेंट ना आए, मे बी इट इज पॉसिबल टू, क्योंकि अगले 2 साल के तक तो हमको फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 2 साल के बाद हमारे काफी सारे स्टोर मैच्योर हो जाएंगे, तो इंटरनली कैश काफी अच्छा कैश जनरेशन होना स्टार्ट हो सकता है। ओके, और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि आर वी प्लानिंग टू लॉन्च एनी दवा इंडिया IPO, और when it can be possible in future to launch that? It is too early to say. अभी तो कोई हमारा ऐसा इंटरनली कोई प्लानिंग नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस भी नहीं है। Right now there is not any thought process. Got it. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Chintan Shah from Girik Capital. Please go ahead. Thank you for the opportunity for the follow-up. The question I had was one clarification. The EBITDA margin which you are talking about is post-rental EBITDA margin or India's EBITDA margin? That's one. And second, on the employee cost, again, harping on it. So, sir, we have been opening stores, 100, 150, 200 stores for last many quarters now, right? That's the aggression we have been, aggressive expansion we have been into. But the 400 stores what you are planning for the next couple of quarters, that has been the case for previous quarters as well, when we were opening 200 plus stores every quarter. So the question is, why the sudden spike in this particular quarter? And even if you say that it will normalize, say 1 or 2 quarters down the line, but the plan for the future, store expansion to reach 5,000 stores, we will keep, the pipeline heavy for at least next few years. Every quarter we will have this 300, 400 store pipeline to be opened in the subsequent quarters. Then why should the employee cost should normalize, at least if that is the case this quarter? And last question on the advertisement side, the marketing budget side. This quarter we haven't seen that bumpiness which one would have expected post the endorsement. So if that lumpiness will expected in 4Q and next year, that's the last question. Thank you.
इस क्वार्टर में हमने, क्योंकि इस साल का हमारा टारगेट था 800 कोको स्टोर खोलना करंट फाइनेंशियल ईयर में वी हैव गाइडेंस फॉर 800 कोको स्टोर, और हमने फर्स्ट क्वार्टर में 134 और 221 स्टोर खोले थे, मतलब 355 स्टोर खोले थे। और इसलिए हम थोड़ा सा सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में एग्रेशन करके वी हैव क्लोज अवर टारगेट, और इसीलिए हमने लास्ट क्वार्टर में Q3 में काफी एग्रेशन प्लान किया ताकि हमारा ये जो इस साल का टारगेट है वो जल्दी खत्म हो। और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर की बात करूं, अगर मुझे 800 या 1000 स्टोर खोलना है तो हर क्वार्टर में मुझे 200-250 स्टोर ही इन प्रोसेस डालना पड़ेगा। इस बार ये और 500 प्लस गया है इस क्वार्टर में, थोड़ा सा एग्रेशन होने के बाद। तो ये आगे जाके 200-250 स्टोर हर क्वार्टर में इन प्रोसेस में रहेंगे और उससे इतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं आएगी। और आगे जाके अभी मैच्योर स्टोर भी आगे होने वाला है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन आपका एबिटा का, सो एबिटा विल बी प्री रेंट प्री इंडेक्स। हमने प्री इंडेक्स एबिटा भी सेपरेटली पीपीटी में दिखाया है ऑलरेडी। तो got it. And the last one on marketing fund, if you can. So your last question was that you anticipated that you'll see a boom in the advertising with the new brand ambassadors. Is my understanding right? Correct. In the third quarter, when we announced last quarter that we were roping in, so I was expecting some bumpiness this quarter and in the second half basically. But that has not getting reflected so far. The cost has been managed pretty well. Yes. So we have managed the cost well. Absolutely right. So what happens is that when you run an organization, you have to plan the right timing to ensure that the entire costs are optimized and managed, and that's exactly what we are doing. I have also given a slice of the answers to one of the previous questions on similar lines, that we have rolled out with both the brand numbers. Yes. I gave an answer on that, and we have initiated huge detail exercises with them, because it is not only that you need to flush the top line, ATL, televisions, etc. It is that where you have to utilize the money judiciously. That's more important. However, so any budget, if you can spell out what's the budget for this year next, if you can spell out? It would be as per the need of the expansion and the organizational move. And that is the precise reason why you'll see, let me add on one more line on this. You'll see many organizations, they put a marketing budget, and based on that, they kind of force themselves to spend that money. But we don't feel that very appropriate. You have to spend it judiciously towards ensuring that, where you can calibrate rightly towards the organizational growth, and I feel that's the right approach. Sure, sir. Thank you for the answers and all the very best. Thank you. The next question comes from the line of Harsha from Seven River Holdings. Please go ahead. Hello. Yes, I just wanted to understand on cohort basis, how many of the stores above 2 years would now be making losses? Sorry, how many? How many stores which are more than 2 years old and would still be making losses? नहीं, ऑन एन एवरेज अगर 2 years प्लस वाले स्टोर है तो सारे के सारे अभी एक भी स्टोर ऑन एन एवरेज बेसिस पे कोई भी लॉस नहीं कर रहा है, एवरेज बेसिस पे। Average basis I understand, but in specific terms, how many stores? So I think more than 2 years we have 135 stores. So of that, how many would there be any store which would still be making losses? Not more than 5%, not more than 2 to 5%. मतलब आप ये समझो कि 150 स्टोर में से 5-10 स्टोर ही ऐसे होंगे जिसकी रेवेन्यू बिलो 2.5 लाख से नीचे होगी या 2.25 लाख से नीचे होंगी, मे बी नॉट मोर देन 2 to 5, मतलब नॉट मोर देन 5%. Okay. And stores which are between 1 to 2 years, which is like 358 stores, उसमें से कितने होंगे जो अभी ब्रेक इवन अचीव नहीं कर पाए होंगे? नहीं, उसमें तो ऑलरेडी, क्योंकि उसमें तो ऑलमोस्ट नियरली, क्योंकि उसमें इंडिविजुअली स्टोर काउंट देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने एवरेज तो दे ही रहे ऑलरेडी.
तो उसमें भी 15 से 20 स्टोर ऐसे होंगे जो नियर 15 से 15% स्टोर ऐसे होंगे जो नियर टू ब्रेक इवन होंगे, नियर टू ब्रेक इवन. Okay, got it. Sure. Thank you, sir. Thank you. The next question comes from the line of Zohaib Rashid from Swing List. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for the follow-up. And I just, a lot of question regarding employee cost already been asked. Just I wanted to make sure that though you have already stated the, valid reason behind the rapid store expansion and all, but coming back to the remuneration part, as the whole-time director remuneration have increased from couple of whole-time directors from 42 lakhs to 60 lakhs per annum. That is a growth of approximately 43%. So don't you think that would also constitute to, some addition to the employee cost? And the second thing I wanted to ask is about the commission. So when we would be taking out this, is it a monthly basis or a quarterly or annual basis you would be taking the 1.1% commission, and where in the line item would it be reflected? That's what I wanted to ask. Commission. It is a part of the employee expense. It is all are in part of employee expenses. So, sir, isn't that affecting the employee cost in totality, because it is applicable from October? It is applicable in this quarter. Yeah, it is not more than 1% commission है, और अगर उसमें remuneration भी add कर दो, it is not 1 or 2% max to max. तो उसमें बहुत ज़्यादा impact नहीं है. If you see, sir, 1% is approximately 1.4 crores in this particular quarter. So, yeah, I mean that would be adding some few percentage in the employee cost, right? And that is most of the question was around, because they saw a good spike in the employee cost. So that would be a factor which would be affecting. That I wanted to say. Thank you so much. So that will not affect, क्योंकि आपने देखा होगा console level पे 52 करोड़ का एम्प्लॉई कॉस्ट है. अगर 52 करोड़ में 1.5 करोड़ का एम्प्लॉई कॉस्ट अगर है तो उसमें क्या इम्पैक्ट है? मतलब नॉट मोर देन 2-3% एम्प्लॉई. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. Ladies and gentlemen, as there are no further questions, I would now like to hand the conference over to Dr. Sujit Paul for closing remarks. Thank you so much, all. Thank you for your questions. I trust that you have got the answers of as many. We as an organization, we stand committed towards spreading affordable healthcare across the country. We believe that that's one critical parameter that we are committed to towards ensuring the same. On the journey of this, we are spreading ourselves in urban and rural India in deep penetration towards ensuring that most of the therapeutic segments are covered, with a focus on diabetes, cardio, gastro, peds, obs-gynae, so on and so forth. This is the need of the hour for India that India really needs, and to make a better Bharat. I thank all of you for the trust and confidence level, and the massive expansion, the aggressive expansion that the organization is into needs a lot of hard work and toil from the employees. It's not easy. And with this, I stay committed along with the entire group, the teams, the promoters, the investors, and all of our colleagues to stay focused onto the mission to spread affordable healthcare in India. Thank you so much. Thank you. On behalf of Zota Healthcare Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.